Now in this sum, we are given that helium gas is filled in two identical bottles. जब identical बोल रहे हो आप तो again the volume will be the same. Okay. The mass of the gas in two bottles is 10 and 40 grams. If the speed is same in both the bottles, what conclusions will you draw? Okay. Now as such, let us go again for the given condition. Mass of bottle A. Mass of the gas, not of mass of the bottle. Mass of the gas in bottle A is 10 gram and mass of the gas in bottle B is 40 gram. This is given to us. We know that the volumes will be equal. Volume of gas in bottle A will be equal to volume of gas in bottle B. VA is equal to VB. We are also given that the velocities are same. यहाँ पे दे दिया है. That is VA is equal to VB. What conclusions will you draw? Now see, we know that we are given mass. हमारे पास जो conditions होती है for velocity of sound in gaseous medium. So there are two conditions we will take into consideration. That is velocity of sound in gaseous medium. Will be directly proportional to the square root of temperature and velocity of sound, again I am not going to write completely, will be inversely proportional to the square root of density of the gas. So we are going to make use of these two conditions to come to any conclusion. क्योंकि हमारे पास मास तो दिया हुआ है तो इसलिए हम कौन सी कंडीशंस को टेक करेंगे, कंसिडर करेंगे, टेम्परेचर और डेंसिटी को. अब इनको हम कोरिलेट कैसे करते हैं? हैव अ लुक हियर. वी हैव बीन गिवन द वॉल्यूम्स, दैट इज द velocities is VA is equal to VB. So speed is the same. So as VA is equal to VB, है ना, स्पीड सेम दिया है ना उसने, वॉल्यूम भी सेम है उनका, तो एज VA is equal to VB. अब ये दोनों को अगर हम एक इसमें लेके आए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों को कोरिलेट देखो कैसे करते हैं. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन डेंसिटी. ठीक है, ये रिलेशनशिप ऐसी आ जाएगी. सो वी राइट ओवर हियर इट विल बी velocity of sound in gas will be directly proportional to the temperature and inversely proportional to the density. अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, ओके, यहाँ T2 और यहाँ ρ2. T2 is the temperature of gas in bottle B and ρ2 is the density. Fine. अब we have to remove this square root sign. यहाँ पे instead of 2 I'll write B, यहाँ पे भी B लिख लो आप, और यहाँ पे हम लिखेंगे TA upon rho B. If I want to remove the square root sign, तो squaring both sides, दोनों साइड को आपने स्क्वायर करे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रूट की साइन निकल जाएगी. सो देयरफॉर यू विल गेट TA अपॉन रो B इज इक्वल टू TB अपॉन रो B. हो गया. अब आपको पता है डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, सो लेट अस गो फॉर दैट. पहले हम इन दोनों को आप ऑल्टरनेंडो, इफ यू रिमेंबर the properties of ratio alternando, so you will apply alternando. TA upon TB is equal to ये रो इधर आ जाएगा, रो A अपॉन रो B. ठीक है. नाउ डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ अ गैस? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो अब मास अपॉन वॉल्यूम को कैसे कोरिलेट करना है आपको? How are you going to correlate that? So
See, velocity of sound is inversely proportional to the density, and this density is mass upon volume. Getting that? So volume will be the same. This is the velocity, huh? ये velocity है. Volume will be the same. So how do we write that? TA upon TB. Okay. Mass upon volume for MA. So MA upon volume divided by MB upon volume. Volume will be the same क्योंकि उसने क्या बोला है? Bottles are identical. So TA upon TB, temperature of the gas in bottle A will be equal to 10 upon, ये कट हो गया आपका, 10 divided by 40. So temperature of the gas in bottle A is to B will be 1/4. Getting that? If it is 1/4, then the temperature of gas in bottle B will be 4 times the temperature of the gas in bottle A. Cross multiply करो आप. So therefore 4 times the temperature of gas in bottle A will be equal to the temperature of the gas in bottle B. Getting that? Cross multiply करें तो temperature of the gas, helium gas in bottle B will be how much? It will be 4 times the temperature of the same gas in bottle A, which are identical, which are having the same velocity. Okay? Any doubt? Please ask.